So, a very good evening, guys. And we are back once again with the evaluation and feedback session of day three of Daily Answer Wars. This is a new initiative started by our team, Civil's Daily team, and you guys are giving a great response. Like, once again, there were a lot of copies that we have checked today also. And I think all of you are also improving in this process and improving your answer writing skills, especially in order to write the mains exam. So, once again, we will start with a new session. This is like the day three of Daily Answer Wars, and again, we will divide this session into three parts. First of all, we will try to discuss the question, make a basic framework of the question that we had in the morning, that we had given you in the morning, and after that, you can ask your doubts in the chat box, and I will try to resolve those doubts. And after that, we will go for the evaluation and feedback. So once again, very warm welcome to all of you and a very good evening. Good evening, Saiba. Good evening, Pratik. सो गाइज आज का टॉपिक बहुत आसान कह सकते हैं क्योंकि अर्बन फ्लडिंग था, लेकिन उसमें एक दो कीवर्ड्स थे जो थोड़ा मतलब ट्रैप करने वाले थे, तो उसको ध्यान में रखना था. देयर वर सम 3-4 keywords which you had to keep in mind. Otherwise, the question was pretty simple because urban flooding is very much in news, like in every monsoon season or every season which has floods, urban floods come to the light. Like we recently had floods in Bangalore, Hyderabad, in many cities. Like in Chennai in 2016, we had like a very devastating floods. In Kerala, we had it 2018. So in Delhi, Bombay, also in these cities, also we have had floods, urban floods. So it is a very prominent phenomenon. And actually, UPSC always asks one or two questions from disasters, and like it has already covered many disasters like cyclones and tsunamis and earthquakes and all. So I think our guys think that this is one of the most important topics that UPSC may be asking in the very near future. So the question, let us move on to the question. Question was like urban flood is a recurrent phenomenon that poses a severe risk to urban ecosystem and the critical infrastructure in India. And we had to examine this statement. So it was very clear that two, three things were mentioned in the question, that urban flood is a very recurrent phenomenon. So you had to define the urban flood. You had to talk about its recurrence. मतलब ये हमेशा होते रहता है, इसके बारे में कुछ डेटा या कुछ सब्सटैंशिएट करना था इसको. And then you had to talk about its impact on the urban ecosystem and the critical infrastructure. अब urban ecosystem और critical infrastructure इस दोनों points के लिए आप दो sections बना के impacts basically बताना था, and then you could have gone for a way forward and then concluded. So this was the basic framework. पहले हम start करते हैं introduction पे. तो introduction में what could we have written? So we could have just defined urban flooding. Like urban flooding क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में जो प्रॉपर्टी होते हैं सिटीज में, उसमें पानी भर जाता है, अर्बन फ्लड्स आते हैं. तो दैट यू कुड हैव रिटन इन योर ओन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज. एंड actually it happens due to excessive rainfall and poor drainage system, so that you could have incorporated that too also in the intro itself. After that, you could have mentioned like 4-5 incidents in a diagram or simply in one or two lines that such incidents have happened in some cities, given the example of major metro cities of India where these floods have occurred. So that would have been a good decent introduction, and I think after that you could have moved on to the body part. So in the body, like one mistake that many guys have done is like they have written everything they knew about urban floods, but this question was not there to write everything you knew, because question is not asking the causes of urban floods exclusively. So you just needed to mention very briefly, like you could just draw a hub spoke diagram and again draw 3-4 arrows and mention the causes. Like there were basically two types of causes are there. One is natural and man-made. Most of the urban floods occur due to man-made causes, but still in natural causes you could have written like excessive rainfall, weather, climate change, changing weather patterns of rainfall. So that is also one of the causes. And again, in man-made, you could have written about poor waste management policies, urban encroachment, and again like things like siltation, poor drainage system, and poor governance also could have been written, like poor disaster management planning. There is no vulnerability assessment and all. So these things you could have written in the causes for urban floods, but you had to ensure that you write it very briefly, because the question was to examine. In examine questions, you need not go into the whole details. You just need to examine the statement given. So you need to focus on the keywords of the question. Whatever the question is asking,
try to pick the subheadings, pick the subheadings from the question itself. So in the question it was like, has very risky effects on the urban ecosystem and critical infrastructure. So basically it was asking the effects urban floods, what effects does urban floods have. So you needed to explain the effects on the urban ecosystem and critical infrastructure. So after writing the causes, as I told you in brief, you could have moved on to explaining the causes on effects on urban ecosystem. So what all you had to write in that? In urban ecosystem, basically you could have mentioned everything like related to the life, property of people. First and foremost is it can lead to loss of lives, and again loss of property, loss of biodiversity, again vegetation and all the natural things that happen in a city. You could have mentioned that in ecosystem thing. And then you could also have mentioned like things about like diseases. There are many epidemics that are caused due to urban floods. Now also we see like cases of dengue, cholera, malaria, etc. in urban centers. So you could have mentioned that urban floods create a chances of epidemics also. So these things you could have written in impacts on the urban ecosystem. And then on the critical infrastructure, this is the part that most of the guys have like missed writing. You first had to define a bit about what critical infrastructure meant. So you could just have written the definition of critical infrastructure, that such infrastructure which is very important for governing the country. For example, you can talk about like energy systems, transportation systems, communication systems, or the national security. So you could have mentioned brief points about all of these, like how urban flood can hamper the transportation system. So again, जब आप ये लिख दे रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि पानी जम जाता है ट्रैक्स पे, फ्लाइट्स कांट टेक ऑफ एयरपोर्ट्स पे. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बन फ्लड्स. तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे इफेक्ट, ट्रैफिक कंजेशन होता है. उसके बाद देन यू कुड मूव ऑन टू एनर्जी सिस्टम, एंड एनर्जी सिस्टम में यू कुड टॉक अबाउट लाइक पावर कनेक्टिविटी, then you could talk about LPG lines, gas issues like petrol pump का issues है. So these you could have explained a bit in energy systems. Then you could have talked about communication systems. Communication में क्या हो गया आपका telecommunication network जो है, और जो भी इंडस्ट्रीज जैसे यूज करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन, मोबाइल टावर्स, ये सब आप लिख सकते थे कम्युनिकेशन सिस्टम में. ऑल्सो वन इनोवेटिव थिंग यू कुड हैव डन हियर इज यू कुड हैव शोन द कनेक्टेडनेस. लाइक ये पूरा जो अब जैसे कोई भी एक सिस्टम पे इफेक्ट पड़ने से हर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको. कम्युनिकेशन सिस्टम इज लाइक इफ टेली कम्युनिकेशन इज नॉट वर्किंग, व्हाट विल हैपन, द कंपनीज विल नॉट एबल टू इंटरैक्ट. उससे क्या होगा कि सप्लाई चेन में इफेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इफेक्ट विल लीड ऑन टू व्हाट, इन्फ्लेशन. आपका प्रोडक्ट नहीं आएगा मार्केट में तो इन्फ्लेशन होगा. देयर विल बी लेस लाइक more demand and less good supply side हो जाएगा प्रॉब्लम, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन. सो व्हाट विल दैट लीड टू, अगेन उससे क्या होता है, फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है. अब मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है तो ऑफ कोर्स पीपल विल have issues with food security. So all this connection you could have explained a bit, like you would have made a cycle or something like that and explained this connection. This could have been a very innovative thing in your answer. Like most of the guys जिन्होंने लिखा भी है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो उन्होंने बस ये लिखा है कि ये तीन चार चार चीजें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, इनमें इफेक्ट हो रहा है, और बस दैट्स इट. तो अगर आप ऐसा लिखते तो दैट वुड हैव श्योरली गिवन सम बोनस पॉइंट्स टू यू. उसके बाद नेक्स्ट यू कुड हैव रिटन द, ये हो गया आपका बॉडी, ब्रीफली कॉजेस बता दिया. उसके बाद आप दो सेक्शंस में डिवाइड करके जो मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन था, इम्पैक्ट इफेक्ट्स ऑन द अर्बन इकोसिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रा, ये बता दिया. तो ये आपका बॉडी पार्ट हो गया कंप्लीट क्वेश्चन का. एंड देन यू कुड हैव मूव्ड ऑन टू द वे फॉरवर्ड. हाँ, बॉडी पार्ट में बहुत लोगों ने क्या किया, ये इंफ्रा में एग्जांपल्स भी दिए हैं. बिल्कुल आप एग्जांपल्स दे सकते हैं. यू कुड हैव यूज्ड एग्जांपल्स लाइक फाइनेंशियल, ये सब इकोनॉमिक एग्जांपल्स दिए हैं कि इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है. जैसे मुंबई में जब फ्लड्स आए थे तो स्टॉक एक्सचेंज में काम करना बंद हो गया था, बीएसई और एनएसई इन सब पे इम्पैक्ट हुआ था. तो दीज एग्जांपल्स आर वेरी गुड एंड यू कैन गिव देम. सो ट्राई यूजिंग देम इफ यू रिमेंबर एनी. सो ये हो गया आपका बॉडी पार्ट. देन इन वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड में बेसिकली आप तीन डायमेंशन से इसको वे फॉरवर्ड को टैकल कर सकते थे. पहला तो वे फॉरवर्ड, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें पहला वे फॉरवर्ड तो वही सब होता है जो जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है, मिटिगेशन करना है, अडेप्टेशन करना है. तो एक पार्ट तो ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट का जो जेनरिक वे फॉरवर्ड होता है.
दूसरा जो वे फॉरवर्ड आप इसमें लिख सकते थे, बहुत सारा इनोवेटिव टेक्निक्स अभी इवॉल्व हो रहा है ये अर्बन फ्लडिंग में। फॉर एग्जांपल देयर इज ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज दिस पॉन्ड सिटी कॉन्सेप्ट इन चाइना दे आर यूजिंग। उसमें क्या करते हैं, वो रेन वाटर को जो है वो हार्वेस्ट कर लेते हैं वहीं पे, और उसको नेचर के साथ मिला के अच्छे से यूज करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो और सिस्टम्स जो है उसको परकुलेशन को भी अलाउ करते हैं ग्राउंड में, तो ताकि वो यूज हो रेन वाटर और वो फ्लडिंग ना क्रिएट करे। एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा अभी चाइना में चल रहा है, इंडिया में तो नहीं आया है, बट वी कैन गिव एग्जांपल्स, सच इनोवेटिव एग्जांपल्स लाइक स्पॉन्ज सिटीज एग्जांपल। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का दे सकते हैं। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वही हो गया कि ब्लू मतलब वाटर और ग्रीन मतलब ग्रीनरी, तो वाटर और ग्रीनरी को इनकलकेट करते हुए जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें ये सब यूज करना चाहिए। तो ये हो गया। एंड देन फ्लड प्लेन जोनिंग का एक कंसेप्ट है, FPZ। उसमें क्या होता है कि आपका जैसे जो भी अफेक्टेड फ्लड प्लेन्स है कि जहाँ इफेक्ट होने वाला है, जो गवर्नमेंट पता करती है कि ये फ्लड प्लेन्स है और यहाँ मोस्ट ऑफ द डैमेज होता है, तो दे एक्चुअली फ्रेम रूल्स, उसके हिसाब से रूल्स बनाते हैं कि देयर विल बी नो इंक्रोचमेंट इन दैट एरिया एंड ऑल। सो दैट इज ऑल्सो अ इनोवेटिव कंसेप्ट विच यू कुड हैव मेंशन। तो वे फॉरवर्ड का दो आइडियाज तुम्हें दिया, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चीज लिख सकते थे, एक ये सब लिख सकते थे इनोवेटिव आइडियाज। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, वो गाइडलाइंस निकालती है। वो बेसिकली गाइडलाइंस हर डिजास्टर के लिए निकालते हैं। तो यू कैन रीड दोज गाइडलाइंस इन एनी बुकलेट, लाइक NDMA के हर डिजास्टर्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं, साइक्लोन, सुनामी, फ्लडिंग। तो वो गाइडलाइंस आप लिख सकते थे। गाइडलाइंस में बेसिकली आपको पूरा पूरा नहीं लिखना था, यू कुड हैव जस्ट रिमेंबर्ड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लाइक जैसे मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताऊं तो एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करती है NDMA। देन दे टॉक अबाउट इन सीटू फ्लड मैनेजमेंट, दीज थिंग्स दे टॉक अबाउट। और भी मतलब जैसे परकुलेशन को ठीक करना, यही सब जो बेसिक चीजें हैं ये NDMA के गाइडलाइंस में है। तो ये आप दो तीन पॉइंट इसमें से भी डाल सकते थे, एंड दैट वुड हैव बीन एनफ। बहुत काफी बड़ा वे फॉरवर्ड हो जाता, लेकिन अगर आप वही मेन ये तीन सेक्शंस में डिवाइड करके फ्लो चार्ट बना के लिख देते तो हो जाता वे फॉरवर्ड। एंड कंक्लूजन वुड हैव बीन अ सिंपल बेसिक वन कि भाई अर्बनाइजेशन प्रोग्रेस हो रहा है। एक डेटा आप डालिए उसमें कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया विल बी अर्बनाइज्ड बाय 2050, एंड सो वी नीड टू टेक दिस प्रॉब्लम सीरियसली एंड वर्क अपॉन इट। तो एक ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन कि हाँ वी आर वर्किंग अपॉन इट। या फिर कंक्लूजन में आप कुछ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते थे कि कोस्टल जोन रेगुलेशंस है कि गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग सच स्टेप्स, एंड द नीड ऑफ द आवर इज टू इम्प्लीमेंट दी स्टेप्स इन अ वेरी प्रैग्मेटिक वे। मतलब अच्छे से इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है और आगे बढ़ना है। तो दैट वुड हैव बीन अ सिंपल एंड फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन। उसमें आपने कुछ नया चीज भी डाल दिया जो आपका थोड़ा नॉलेज भी दिखाता है। तो दीज वर द कंक्लूजन आइडियाज आई कैन गिव यू। तो बेसिकली यही था इंट्रोडक्शन में, सिंपल अर्बन फ्लडिंग डिफाइन करना था, कुछ एग्जांपल्स देने थे, बॉडी में कॉजेज से स्टार्ट करना था, बेसिक कॉजेज थोड़े बहुत लिखने थे। देन यू कुड हैव मूव्ड ऑन टू द बॉडी जहां पे आपको इम्पैक्ट बताना था अर्बन इकोसिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे। और उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड लिखना था, एक कंक्लूजन डालना था, एंड दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिसेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So I think you guys have got it. Overall basic framework आपको पता चल गया है. So now let me move on to the doubts. If you have any, you can ask me in this chat box. Saiba, good evening. Dipali, good evening. Pratik, good evening. Divya, good evening. Ritu, good evening. ठीक है, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द दिस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक थिंग। आप लोगों के दो आंसर्स दैट वर रिटन बिफोर 2 PM, आई हैव गॉन थ्रू दोज आंसर्स एंड सॉ देम, लाइक किसने क्या गलत लिखा है। तो अगेन इफ आई टेल यू अबाउट द जेनरिक मिस्टेक्स, लाइक मोस्ट पीपल हैव जस्ट पोर्ड आउट देयर नॉलेज। बहुत लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ अपना जो नॉलेज है उसको दिखाया है, तो उसमें कॉजेज बहुत सारे लिखे हैं, एक डेढ़ पेजेस का कॉज लिख दिया। तो वो जरूरत नहीं था, इसमें आप बेसिक ब्रीफ था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जो डिमांड है क्वेश्चन में उसको एड्रेस करना है। सो दैट विल बी द की, लाइक गोइंग फॉरवर्ड। आप वो सोचिए कि क्या लिखा है एग्जैक्ट क्वेश्चन में, आपको अपना फुल जो स्पैन ऑफ नॉलेज है वो नहीं दिखाना। तो एक ये जेनरिक मिस्टेक है। और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना तो किसी ने डिफाइन किया, बहुत कम लोगों ने एक तो लिखा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डिफाइन तो खैर बहुत कम ही लोगों ने किया। तो दैट यू कुड हैव डन बिकॉज दोज कीवर्ड्स वर लाइक द मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो अगली बार से जब भी कोई क्वेश्चन आए, ट्राई टू फ्रेम योर सब हेडिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। उससे क्या होता है ना कि यू जस्ट आपको ये पता चल जाता है, यू जस्ट नो कि लिखना क्या है एग्जैक्टली, क्या पूछ रहे क्वेश्चन। बिकॉज अब मान लीजिए इसमें आप इफ यू हैड फ्रेम्ड द हेडिंग लाइक रिस्क ऑन अर्बन इकोसिस्टम एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो आपको समझ में आ गया ना कि इन्हीं दो टॉपिक्स पे लिखना है मेरे को बेसिकली. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बाकी अगर इफ यू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड फ्रेम अपने हिसाब से सब हेडिंग्स आप फ्रेम करेंगे तो थोड़ा इधर उधर होने के चांसेस होते हैं. तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिव्यूज फॉर टुडे. सबसे पहले ऋतु. अगेन गुड आंसर. अगेन आप भी कॉजेज आपने बहुत सारे लिखे हैं ऋतु, तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं. और इम्पैक्ट्स में जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी का बताया मैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इकोनॉमी, इन सब चीजों पे जो इम्पैक्ट्स हैं वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा. नेहा शर्मा. नेहा शर्मा अगेन आपने सब कुछ लिखा है लेकिन जो मेन चीज पूछा गया है क्वेश्चन में, वही जो क्रक्स है क्वेश्चन का, वो मिस कर गए हैं. इम्पैक्ट्स नहीं लिखे हैं तो वो थोड़ा देख लीजिए. Rishabh, again, you have also mentioned a lot of causes, so that can be reduced. Otherwise, your answer is also good. Uh, वो जो सेक्शन है दोनों अर्बन इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वाला थोड़ा डिफरेंट सेपरेट करके अच्छे से लिख सकते हैं. पल्लवी, योर आंसर इज गुड, लाइक यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. लेकिन आपने लाइक दो बार सिटीज बताए हैं कि कौन कौन से इफेक्ट हुए. लाइक इन इंट्रो ऑल्सो यू हैव मेंशन 2-3 एग्जांपल्स एंड देन अगेन एक फ्लो चार्ट बना के यू हैव मेंशन. सो देयर इज नो नीड टू डू द ऑल दैट. In intro, just after defining urban flooding, you can mention 3-4 examples of the recent events that have happened, and that will be, I think, sufficient to substantiate that this is a recurring phenomenon. In introduction, I think also you have missed the definition of urban flooding. So basic definition is a good intro. Otherwise, अगर नहीं भी लिखेंगे तो I don't think ये बहुत लॉस है, like क्योंकि pretty explanatory term है खुद ही. लेकिन वहाँ एक बेसिक लिख दीजिएगा तो that would be better. अवनीश, अगेन योर इम्पैक्ट्स कैन बी रिटन बेटर. थोड़ा सा वो कनेक्टेड जो मैं बताया कि कनेक्शन कैसा है, अगर कोई भी एक सिस्टम इम्पैक्ट होता है तो पूरा सिटी का जो है सिस्टम इम्पैक्ट हो जाता है, वो आप दिखा सकते हैं. अदरवाइज आपके जो पॉइंट्स है वो ठीक है, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन अच्छा है आपका. विवेक चौहान, लाइक again in intro you can mention some examples. You have not mentioned examples, I think. Otherwise your explanation is pretty good. Diagram you have drawn a diagram about leaching and all, so that is very good. That shows your knowledge. And explain what is critical in infrastructure, like try to explain what is basically this energy system, impacts on the energy system, transport system, and all of these things. You can just make points and write brief statements about all of this, uh, by dividing it into sections. Otherwise, the structuring of your answer is pretty good, like how you have done. So I think you will get 6 marks out of 15 if you write such an answer. Pretty decent answer. 6 is good marks, I will say. Sweta, your introduction is long. Like आप बहुत ज्यादा पहला एक दो लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो डायरेक्ट आप अर्बन फ्लडिंग पे आ सकती हैं. कम टू द पॉइंट. आपने अर्बनाइजेशन लिखा है शायद कि अर्बनाइजेशन में ये सब हो रहा है, तो वो अभी डिमांड नहीं था. इफ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन GS1 अर्बनाइजेशन तो आप लिख सकते थे. यहाँ थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखना है GS3 में, तो आप सीधा अर्बन फ्लडिंग को डिफाइन कर सकती हैं, वहीं से स्टार्ट कर सकती है. बाकी और कंटेंट इज गुड. अगेन इम्पैक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अदरवाइज बाकी सब ठीक है. साहिबा, your also impacts need to be written better, क्योंकि that is the main thing, that is the main requirement of this answer. Otherwise other things are good. You have used the flow charts and all, so those things are fine. Impacts wale part ko you can divide it into 2 parts and write it better. So this was Saiba. Ankita, again impact on critical infrastructure you have also not written, so please try to incorporate that. Other parts are fine. Other parts of the answer are fine. Nisha, again causes are missing, so causes are a lot of causes have been written actually, so you can reduce them. Utna nahi likhna. Impacts can be written better. Baki your answer is also fine, pretty decent answer. Avinash, like you have given the example of Pakistan floods in the introduction, so I will suggest, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंडिया आई गेस, सो आई विल सजेस्ट कि आप इंडिया का ही एग्जांपल दे दीजिए. बहुत सारे अर्बन फ्लड्स हुए हैं अपने यहाँ भी, तो नो नीड टू मेंशन पाकिस्तान राइट हियर. बाकी ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, बट सिंस क्वेश्चन में इंडिया लिखा हुआ है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. अदरवाइज योर आंसर इज ऑल्सो गुड. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा अच्छे से बताइएगा तो अच्छा होगा. और एक एड कंक्लूजन में यू कैन जस्ट मेंशन कि बहुत वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाई पेस्ड अर्बनाइजेशन, बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, सो इट इज प्रीटी इमिनेंट पर्टिनेंट टू लुक एट these problems and try to solve it in a holistic manner. So this is all right, and you can just mention a summarizing conclusion. कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है कंक्लूजन में. Some people have mentioned like someone I think has mentioned the quote of David Attenborough from COP 26. अगर आपको वैसा कुछ स्टेटमेंट याद आ रहा है
तो इट इज वेल एंड गुड, वो लिख दीजिए। बाकी इफ नॉट देन बेसिक इंग्लिश में एक नॉर्मल सा कंक्लूजन डाल दीजिए, वो अच्छा रहता है। अविनाश, प्रतीक नागवंशी, आपका सब कुछ पूरा आंसर सही है, लेकिन वही इम्पैक्ट्स आपने लिखे नहीं है, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। अदरवाइज तो बाकी सब कुछ ठीक है, अच्छा नीट एंड क्लीन आंसर है, लेकिन मेन जो है इम्पैक्ट्स वो नहीं लिखा हुआ है, तो यू कैन लुक एट दैट। पूजा खंडे, योर आंसर इज गुड, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वेल। Otherwise वही two sections you could have also made, लेकिन you have written a lot of things that covered the topic in a holistic manner, so I think that is good, your answer is good. Manujanshu, your answer is also good, structuring is pretty well. In way forward, like some this NDMA guidelines and all you can mention, otherwise you have also written well, flow charts ये सब आपने अच्छे बनाए हैं, तो ठीक है आपका आंसर भी। तन्मय, again a good answer, थोड़ा सा interconnected nature of this impact on critical infra could be mentioned, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कि क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, मतलब फ्लड में क्या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्म हो सकता है, तो कुछ इसमें अगर इनोवेटिव पॉइंट्स, अगर क्वेश्चन का मेन डिमांड ही है तो इसमें थोड़ा इनोवेशन आप डालिएगा तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, रादर देन राइटिंग ऑल दो कॉजेज और बाकी जितना कुछ मैं बताया वो तो सब लोग लिख रहे हैं, तो ट्राई ट्राई डूइंग समथिंग कि एक दो पॉइंट ऐसा सोचिए जो मतलब gives you some extra marks. Your answer ऐसे तो decent है तन्मय। करिश्मा, अगेन यू हैव मेंशन्ड a lot of causes which can be reduced. इंट्रो में भी आपने कॉजेज लिखे हैं, उसके बाद फिर अलग से कॉजेज भी लिखे हैं, तो इतना नहीं लिखना है, इंट्रो के बाद जस्ट दो तीन पॉइंट्स लिख देने से हो जाएगा। बाकी ठीक है, इम्पैक्ट्स को थोड़े से एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी एम, अगेन योर आंसर इज प्रीटी गुड, अच्छा होलिस्टिक आंसर है। यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ योर आंसर, एंड लाइक explanation उतना नहीं है, लेकिन since you have covered it with examples, I think that covers up whatever you are missing, so I will say pretty good answer. Next is Ranu. Again Ranu, impact on critical infra नहीं है आपके आंसर में, you can add that, and in way forward NDMA guidelines and all you can add, otherwise your answer is also decent. Deepali, good answer, like you have covered it well today, mentioned the impacts also good, so I think well written. Mohi, you need to improve the presentation of your answer a bit, थोड़ा सा neatness cleanliness ये सब लाइए आंसर में, देखने में अच्छा लगे, एग्जामिनर विल मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो उसको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, ही विल रीड इट इन अ गुड मैनर, he will get inclined to give some good marks if he sees some good points, so neat and cleanliness is also an important part of answer writing. Again impacts on critical infra ये missing है, तो यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट, अदरवाइज बाकी आपका जो और कंटेंट है वो सही है। साही, मेंशन सम एग्जांपल्स आफ्टर इंट्रोडक्शन, लाइक यू हैव नॉट मेंशन दिस रिकरेंट फ्लडिंग फेनोमेनन, तो वो भी ध्यान में रखना है, तो मेंशन सम एग्जांपल्स, अदरवाइज वन सेपरेट सेक्शन यू कैन मेंशन ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अदरवाइज योर आंसर इज आल्सो प्रीटी डिसेंट। निखिल, यू हैव रिटन प्रीटी गुड आंसर, आई थिंक यू हैव कवर्ड लाइक होलिस्टिकली, तो अच्छा आंसर है निखिल आपका। Anirudh, you can try to make your answer a bit more crisp. Like what you are doing is you are writing two, 3 points in each part, and then you are explaining it a lot. So इतना explain करने का जरूरत नहीं है. There are some points. अब there is something like poor solid waste management. So it is already explanatory. अब इसको नहीं explain कर रहा है. So again कि हाँ इतना solid waste generate होता है, and so try to write crisp points and more points in GS answers. जितना ज्यादा point लिखे उतना अच्छा है. एंड अदरवाइज स्ट्रक्चरिंग आपका ठीक है आंसर का, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन फाइन है, मतलब ठीक लिखा है आपने, कॉजेज भी ठीक लिखा है, और जो इम्पैक्ट्स, इन इम्पैक्ट्स यू कैन अगेन मेक टू सबसेक्शंस एंड राइट इट इन अ बेटर मैनर, और वे फॉरवर्ड में भी आपने सिर्फ एक ही दो पॉइंट्स लिखे हैं, तो आई सजेस्टेड यू सम गुड आइडियाज, तो उसमें थोड़ा सा आप यू कैन इंक्रीज योर पॉइंट्स इन द वे फॉरवर्ड पार्ट. So try to work upon a bit upon the content. I think you can just read a bit about the topic before it if you are lacking in the content part. धीरे धीरे ना वो आंसर राइटिंग भी हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, चिंता मत करिए उसके लिए, थोड़ा कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है, तो कंटेंट थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, अगर थोड़ा सा डाउट्स है उसमें कुछ तो योर आंसर विल गेट आई थिंक 4.5 आउट ऑफ 15, अनिरुद्ध, जैसा आप अभी लिख रहे हैं. पूजा उकरडे, योर आंसर इज फाइन, इंट्रो एंड कॉजेज आर वेल मेंशन, ठीक अच्छा आंसर है. थोड़ा अगेन यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर राइटिंग अ बिट नीटली एंड क्लीनली. योर वे फॉरवर्ड कंक्लूजन ये सब पार्ट्स भी गुड है, मतलब यू हैव रिटन वेल. Impacts also you have mentioned some good points, but again it could be divided into two parts, and दोनों parts को आप अच्छे से थोड़ा लिख सकते थे with some good presentation, that would have been a very good answer.
So still you will, because of your content, you will get good marks in this answer. 6 out of 15, I think you will get, Pooja. So next is China. Like you have done good use of flow chart, but like you have only mentioned the causes. बहुत सारा causes लिखे हैं आपने, like ऐसे भी पहले भी लिखे हैं, उसके बाद फिर flow chart बना के भी लिखा है, तो इतना नहीं है। और इतना नहीं लिखना है causes, थोड़ा brief रखिए उसको, और impacts missing है, तो demand of the question जो है वही आपने miss कर दिया है, तो check the good copies once, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। देवाशीष, अगेन यू ऑल्सो हैव रिटन अ लॉट ऑफ अनवांटेड थिंग्स, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, कॉजेज, ये सब काफी डिटेल्स में लिखा है आपने, जिसकी जरूरत नहीं है इसमें। और इम्पैक्ट्स जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोसिस्टम पे, ये सब आपने मिस कर दिया है, तो आई थिंक यू नीड टू वंस रीचेक योर आंसर। जुरीशा, अगेन यू कैन ऑल्सो मेंशन सम एग्जांपल्स लाइक ऑफ रिकरेंट फेनोमेनन, क्योंकि वो भी मेंशन था क्वेश्चन में। और कॉजेज भी थोड़ा ब्रीफ रखिए, थोड़ा वही डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझिए, बाकी योर आंसर इज ऑल्सो फाइन। आलोक, योर आंसर इज गुड अटेम्प्ट, मतलब अच्छा लिखा है आपने, स्ट्रक्चरिंग काफी अच्छा है आपके आंसर का, सो आई थिंक यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर योर आंसर। Hima, again, your answer is also good. You have covered like many points pretty well. So examples you can just mention after introduction only. In the latter part, you don't need to mention it, क्योंकि वो structuring गड़बड़ करता है। जैसा क्वेश्चन का ऑर्डर है, try to move in that order only, so that will be better. और impacts और जो causes हैं, इसमें थोड़ा confusion है, like you have mentioned causes and impacts and something like that. So वो थोड़ा देख लीजिए, otherwise your content is fine, बाकी जितना भी लिखा है आपने। Pallab, your answer is also fine. Again, introduction is good, conclusion is also good. थोड़ा simple है introduction, but still it is good. It will fetch ठीक ठाक marks. Causes are also fine. बहुत कम, you have mentioned I think a bit less, but still it is good, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं था उतना। Structuring of your answer is fine. Again, you could have improved upon the body part. Just mentioning straight points will get you average marks. थोड़ा सा अच्छा, if for scoring good marks, try to mention something innovative, try to mention like good examples, एक दो अच्छे examples you can add, or you can mention this interconnectedness thing, पूरा एक cycle, you can draw a cycle and show this, that impact on one system can lead to the breakdown of the whole city structure, like बहुत सारे systems impact हो सकते हैं, so you can just incorporate these things in your answer. Otherwise जो generic, जो basic structure of the answer है और जो generic points होने चाहिए, those things are there in your answer. So I think you will get 6 marks out of 15, but to cross that barrier, you need to make it थोड़ा सा innovative. अब जैसे urban ecosystem you have talked about, so you can mention some extra points in that, like forest fires, accidents due to urban floods. So these things could be mentioned. Otherwise, generic जो overall है वो ठीक है आपका आंसर। 6 out of 15 I'll give in this type of answer. Pallab. Ramji, again, you have not mentioned examples, so you can do that. Structuring could be a bit better in your answer. First, try to mention intro and then causes in brief, then go for impacts. Otherwise, थोड़ा hodgepodge हो गया है आंसर। Points are fine, like आपका content अच्छा है, बाकी थोड़ा structuring पे ध्यान दीजिए। राम जी, उत्कर्ष, your answer is also good. अगेन इंट्रो में थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग, लाइक यू कैन जस्ट डिफाइन इट कि जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम वाटर एक्यूमुलेट्स, तो उसको वही अर्बन फ्लडिंग है बेसिकली। सो यू कैन जस्ट डिफाइन दैट। अदरवाइज अदर थिंग्स आर गुड, मैप हैज बीन यूज्ड एंड ऑल ऑफ दीज आर गुड थिंग्स, सो वेल रिटन उत्कर्ष। सुषमा, अगेन इन इंट्रोडक्शन सम incidents could be mentioned, like examples after the first line. Otherwise, your answer is also fine. Again, impact on critical infrastructure part is missing. Conclusion, you have written a good conclusion, I will say. Other things are fine, just that impact thing is missing, so try to incorporate that. DK Naresh, try to submit in PDF format DK, because first and foremost क्या होता है कि if you just send the photo, confusion is there, which page is the second page and which page is the third page. So आपके आंसर में यही कंफ्यूजन है, लाइक कौन सा क्या है वो समझ में नहीं आया ठीक से, सब कुछ मिक्स्ड लग रहा है। आपने सब हेडिंग्स भी नहीं डाले हैं, सो यू हैव नॉट आल्सो गिवन सब हेडिंग, सो इट वाज प्रीटी हार्ड टू डिटरमाइन कि कहाँ कॉजेज स्टार्ट हो रहा है, कहाँ इम्पैक्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ वे फॉरवर्ड स्टार्ट हो रहा है। So try to write it in PDF format, these issues will not be there, and also try to give subheadings in your answers, so that will be better. DK Naresh. Rajita,
you have also got the demand of the question pretty well. Like your crux of the answer is pretty good. जो आपने लिखा है, the thing what you have written, the question demanded exactly that thing. But again, 15 marker. This is a 15 marker question. तो थोड़ा नमक मसाला like extra things भी add करना जरूरी है. So you can just mention some. You have just mentioned the impacts and way forward and ended it. So way forward को थोड़ा explain कर दीजिए, थोड़ा सा causes भी बता दीजिए. Try to mention one or two causes also. So that will be a good answer. Overall मतलब holistic answer हो जाएगा राजिता. So that was that guys for today. I think I have reviewed all the answers. किसी का छूट गया है तो आप chat box में बता सकते हैं. बाकी I don't think I have missed anything. Till 2 p.m. those guys who have submitted it, submitted their answers. I have tried to review all of your answers, and I think I've reviewed all of them. So Survi, good evening. And again, we will be back tomorrow with this session of day 4 of daily answer wars. Till then, I think keep answer writing, join the discussions, night owl discussions, and keep on building upon your content through the daily notes that I post of the good copies. You can incorporate some examples from them, some innovative points from them in your notes, and make your notes better. You will move forward in the notes war also. So best of luck, guys. Keep answer writing, and again, I will ask you guys, request you guys, whoever can join CD Prime, like CD Warzone Prime, please try to join it because again, we are trying to make a core group of Prime students whom we can guide better, and those will be our focus students, like whom will try to better try to make them better at answer writing, like at pro level. So that is that, guys, for today. Again, we will meet tomorrow with day 4 of daily answer wars. Keep answer writing. So thank you. Thank